Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we are back with the following list of topics to discuss. So let's discuss. The first topic says about the collegium system is the law, okay, which has been said by recently by Supreme Court कि जब तक सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक दूसरा लेजिस्लेशन लेके नहीं आते तब तक कॉलेजियम सिस्टम एक लॉ बना रहेगा. ठीक है. So today we know about the collegium system, which is a system of transfer and appointment of judges, okay, where judges are getting appointed by the judges. Okay. So this collegium system has evolved through various number of judgments by the Supreme Court. Okay. And therefore we can see that here the collegium system consists of the Chief Justice of India as the head and four other senior most judges of the court. Okay. So the Chief Justice of the High Court as the head and four other senior most judges of the High Court represents the collegium system of the High Court that is within the respective state. Okay. So therefore we could see that after the names have been decided by the collegium, the government has the role to play. That means if a lawyer is to be elevated as a judge in a high court or a Supreme Court, government's role is in getting an inquiry conducted by the Intelligence Bureau. And regarding the collegium's choices, government can also raise objections and seek clarifications. But the government is bound under constitutional bench judgments to appoint them as judges if the collegium rescind the same names. So by the President under Article 124 and 217 of the Constitution, judges of the Supreme Court and High Court are appointed. And consultations with such of the judges of the Supreme Court and the High Court as he may deem necessary, the President is required to hold. So therefore, we could see that this Article 124 as well as 217 gives some of the emancipation power with respect to their appointments. So this evolution of the collegium systems is through various number of cases, be it the 1981 first judge case, that is the SP Gupta versus Union of India. Okay. Also, we can see about the second judge case came around 1993, that is the Advocates on Record Association versus Union of India. Okay. And finally, we could see the third judge's case, okay, which says about the collegium system and give legitimacy to the collegium system, okay, from which we could still see today also the collegium system still functioning. So there are various number of challenges today which is happening with respect to collegium, because there is a constant battle between the judiciary and the executive in the appointment, and appointment in judiciary is very slow. Today the nepotism is increasing, lack of transparency is there. So therefore, to solve the issue of the collegium system, government tried to bring on the National Judicial Appointment Commission. Okay. So therefore, like any institution today who goes for nepotism, okay, who goes for all such number of favoritism, okay, this will directly erode the independence, transparency, accountability, and integrity of institutions like the judiciary. So therefore today यहाँ पे अभी जो इशू चल रहे हैं, ठीक है, इश्यूज के तहत ये कोलिजियम सिस्टम बहुत ज्यादा न्यूज में है. ठीक है. तो अभी देखते हैं कि जब तक एक गवर्नमेंट लेजिस्लेशन लेके नहीं आते तो तब तक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि कोलिजियम सिस्टम विल कंटिन्यू. ओके. एंड द अपॉइंटमेंट एंड द ट्रांसफर ऑफ जजेस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोलिजियम सिस्टम. तो उसी के बारे में यहाँ पे न्यूज में था. ठीक है. चलो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल ऑफ 2022. तो यहाँ पे रिसेंटली वी हैव सीन दैट राज्यसभा क्लियर्स वाइल्ड लाइफ बिल, मिनिस्टर प्रोमिसेस टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स. ओके. तो यहाँ पे जो अभी फिलहाल के लिए ये वाइल्ड लाइफ लाइक अमेंडमेंट बिल है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इज टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड स्पीसीज. ओके. ऑल्सो फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, supposedly the grazing or the movement of the livestocks, okay, and the bona fide use of drinking and household waters by local communities in these protected areas. Also यहाँ पे बोला गया है protection about the forest lands, और यहाँ पे जो rights है of the people basically in and around these forest lands, उनके ऊपर भी यहाँ पे बात किया गया है. So therefore, this amendment proposes a new schedule for species listed in the appendices under the CITES, that is the Convention on International Trade on Endangered Species of Wild Flora and Fauna. So यहाँ पे जो section 6 है, इसको amend किया जाएगा to constitute standing committee to exercise such powers and duties that may be delegated to it by the State Board of Wildlife. यहाँ पे जो section 43 है of the act that amended which permitted the use of elephants for religious or any other purposes. So यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये अपॉइंट करेंगे साइंटिफिक अथॉरिटी को टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द इम्पैक्ट ऑन द सर्वाइवल ऑफ द स्पेसिमेंस ऑफ बीइंग ट्रेडेड. तो देयरफॉर कोई भी यहाँ पे वायलेट करेंगे तो यहाँ पे जो पेनल्टीज है, ये पेनल्टीज का अमाउंट फिक्स किया गया है कि फॉर जनरल वायलेशंस
25,000 से लेके 1 लाख तक का फाइन होगा। और इन स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स द मिनिमम फाइन विल बी ₹10,000 एंड हैज बीन एनहांस्ड टू ₹25,000। सो अभी यहाँ पे कंसर्न्स क्या है इस एसोसिएटेड बिल का, बिकॉज यहाँ पे जो फ्रेज है एनी अदर पर्पस इज वेरी मच वेग as and has potential of encouraging commercial trade of elephants. So some important issues regarding human wildlife conflict, eco-sensitive zones has not been addressed. And according to the report provided by the Parliamentary Strength Committee, species listed all under the 3 schedules of the bill are incomplete. So the scientists, botanists, biologists are short in number and need greater inclusion of them to accelerate the process of listing all existing species of wildlife. तो उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। जो बिजनेस एंड कॉर्पोरेशंस है which are involved in real estate, they must adhere to the law rigorously to balance out their financial and muscle strength. Today, if you see about the Nicobar jungles, which are being completely ruined and removed for the benefit of some corporations, essentially the wildlife is actually attacked not by humans but by the corporations. So only having regulations and technology understandings are not sufficient. Local communities must also realize the value of their respective engagements. तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे जो बिल है, इस बिल ज़्यादा प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ के लिए बात बोला गया है। तो अभी देखते हैं, राज्यसभा के द्वारा पास हो गया है। तो अभी वी हैव टू सी अबाउट दैट हाउ दिस bill could directly make it as an act so that we could directly amend the provisions in association with this respective bill. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। श्रीलंका रेज्यूम्स टॉल ट्रेड एग्रीमेंट्स विद इंडिया। तो यहाँ पे एक छोटा सा न्यूज़ है कि श्रीलंका रेज्यूम करते हैं जितने भी हम लोग के साथ ट्रेड एग्रीमेंट स्टॉल किया गया था। ओके, सो विथ श्रीलंका सून टू गो विथ सम नंबर ऑफ इंस्टॉल्ड इकोनॉमिक टेक्निकल एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग के साथ 11 राउंड्स ऑफ बायलैटरल टॉक्स हुआ है। ओके, राइट फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 2016 to 2019 with the aim of broadening and deepening the respective trade agreements between India and Sri Lanka. Okay, because we are existing with the ISFTA, that is the free trade agreement. So the ETCA faced considerable resistance from sections with Sri Lanka, mainly from the nationalist groups and trade unions, who saw the pact as India's giving an unfair advantage. So this itself followed a decade-long but futile negotiations of yet another pact, which is known as the CECA. So today, Sri Lanka's recent emphasis on this FTA and this FDIs is a part of President Ranil Wickremesinghe strategy for economic recovery in the island nation, reeling under the impact of the worst economic crisis. So today we could see about the country, okay, contracted by an estimated 9.2% this year, and it is estimated to contract by around 4.2% in 2023, according to the World Bank. तो आज इनका हालत इतना खराब है. So therefore, today Sri Lankan PM underscored the need for Sri Lanka to have a greater access to the world market, and towards this end, Sri Lanka has resumed efforts to integrate with key markets such as India and China because they are the top 2 sources of imports or Sri Lanka. तो इसी के बेसिस पे आज बढ़ के देख लेंगे, क्योंकि इनका जो एक एस्टिमेटेड है 9.2% का ईयर का, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा बोला गया कि ये लोग 4.2% ग्रो करेंगे इन 2023, विच इज़ अ वेरी लेसर अमाउंट। तो उसी के बेसिस पे ये लोग अपना एग्रीमेंट्स खोलना चाहते हैं सो दैट दे कुड ट्रेड मोर एंड मोर विद कंट्रीज लाइक इंडिया। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, फिक्स वाटर एजुकेशन एंड हेल्थ। तो यहाँ पे जो हम लोग का जो हम लोग का एक अभी प्रॉब्लम्स चल रहा है, okay, which says about the abhi recently Boston consulting groups in India, they said about that how to urgently fix fundamentals such as water education health, क्योंकि आज हम लोग का बहुत ज़्यादा एक poor हालत है। if I say about the groundwater level, ठीक है, so about we could see that in today's time period, okay, according to one report of Central Groundwater Board, with 230 billion meter cubes of groundwater drawn out each year, okay, तो यहाँ पे जो एक estimated depletion है ये around 122 to 199 billion meter cubes है. So therefore today we could see that 89% of groundwater is extracted and is used in the irrigation sector. Okay, and because of this we have seen that आज groundwater level बहुत ज़्यादा कम में है. It's basically growing to a much number in lesser medium. Okay, तो आज हम लोग देख रहे हैं कि how the groundwater is getting depleted soon. अगर हम लोग प्रॉब्लम्स इन द हेल्थ केयर सेक्टर देखें तो आज वहाँ पे भी आज हम लोग का बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम्स है, बिकॉज टुडे द डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो इज अराउंड 1:1800. ओके, एंड 78% डॉक्टर्स कैटर टू अर्बन एरिया. ओके, सो देयरफॉर टुडे वी कुड सी दैट द हेल्थ बजट ऑफ इंडिया has merely rise from around 1.2% of the GDP in around 2013-14 to around 4% in 2017-18. Even the national health policy aim
for this to be around 2.5% of the GDP. But आज ये नहीं हो रहा है, ठीक है? So therefore today we have got infrastructure constraints, we have got crumbling public health infrastructures. Okay, we do not see any good number of role of the private players. Okay, higher out of pocket expenditures यहाँ पे बढ़ा हुआ है, poor insurance penetration है, fake doctors का ratio बढ़ता जा रहा है. Okay, so in all these categories today even we can see deplorable conditions in the healthcare sectors also. अगर मैं education के बारे में बोलूँ तो education are also going with for a lot many number of issues. तो इफ आई सी अबाउट द एजुकेशन सेक्टर, आज एजुकेशन में हम लोग फुल पोटेंशियल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वी कैन सी दैट देर इज अ डिक्रीज इन, और देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ गोइंग असाइड एनी नंबर ऑफ R&D इन दिस रेस्पेक्टिव एजुकेशन सिनेरियो. तो आज जो एजुकेशन में हम लोग का प्रॉब्लम्स है, ओके, जो हम लोग को रिफॉर्म चाहिए इन दिस एजुकेशन सिस्टम, इट कैन नॉट बी मीट एज सुन एज possible because we could not see the implementation of even the NEP recently, that is the National Education Policy 2020, which looks after the problems, but still we could not see about the education sector, क्योंकि आज यहाँ पे जितने भी dropouts है ये बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं. Okay, people are getting more and more number of dropouts as compared to the system which happened earlier. So there are today more number of people who are basically dropouts. Okay, because यहाँ पे आज status of the Indian education system is very poor. बिकॉज रिसेंटली यहाँ पे यूनेस्को के एक डाटा भी आया था, एंड यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया हैज वन ऑफ द लोएस्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर रेट्स ऑन एजुकेशन पर स्टूडेंट. ओके, एंड वी हैव गॉट हार्डली अ लिटरेसी ऑफ अराउंड 77%. ओके, एंड दैट इज नॉट इवन 9%. सो वी कुड सी दैट हार्डली द क्लासेस फ्रॉम 3 to 5 is being attended by 58% of the children. Okay, so less than half, 47% were able to do simple 2-digit subtraction. तो यहाँ पे आज हम लोग का प्रॉब्लम्स भी है विद रेस्पेक्टिव टू एजुकेशन. तो डियर उसी के बेसिस पे यहाँ पे बोला गया है, बॉल्स्टॉन कंसल्टिंग ग्रुप्स इंडिया चीफ दिस जन्मे जया सिन्हा के द्वारा उन्होंने सक्सेस किया गया है कि आप लोग जल्दी से जल्दी वाटर प्रॉब्लम, एजुकेशन प्रॉब्लम और हेल्थ प्रॉब्लम ठीक कीजिए, इफ यू वांट्स टू मेक इंडिया वेरी मच ऑफ सक्सेसिव बाय द टाइम पीरियड ऑफ अराउंड 2047. तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे रिकमेंडेशन आया था, तो इसी के लिए यहाँ पे ये न्यूज में थे. ठीक है, लास्टली टू द एडिटोरियल वी कुड सी दैट यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है अबाउट द सस्टेन ग्रोथ इन रेमिटेंसेस. ओके, रेमिटेंसेस के बारे में बोला गया है. Okay, so what is this remittances? It broadly means a sum of money transferred by one person to the another. Okay, and therefore it is not directly going in from within the same country. ये बाहर के country से आ रहे हैं. ठीक है, so we have seen in a recent time period जो हम लोग का remittances है वो बढ़ा है. So the remittances sent worldwide are expected to cross around $794 billion. तो आज अगर मैं खाली इंडिया में बोलूं तो इस इंडिया में हम लोग का 4.9% का एक बढ़ोतरी मिला है in this respective remittances. Okay, so today we could see that India is directly receiving the highest number of remittances in accordance to around $100 billion. तो इतना हम लोग का रेमिटेंसेस आ रहे हैं. तो इंडिया फर्स्ट पोजीशन में है, उसके बाद मैक्सिको है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद फिलीपाइंस है. ओके, तो ऐसे करके हम लोग के बहुत सारे कंट्रीज है हु डायरेक्टली शेयर्स by total amount the 100 billion trade of this remittances coming from the outer world. Okay, so therefore today we can see that post-pandemic reopening, revival and the recovery of various sectors in home countries have directly expedited the amount of remittances. Also, improvement in the income of migrant workers and employment situations has improved their ability to send remittances. So आज हम लोग का जो इनवर्ट फ्लो है रेमिटेंसेस का वो बढ़ता जा रहा है. तो द शेयर ऑफ रेमिटेंसेस इज हाईएस्ट इन यूएस, यूके, सिंगापुर, which have increased by around 26 to 36%. आज जीसीसी कंट्री से कितना आ रहा है, अराउंड 54% आ रहा है. और ये 54% आ रहे थे तो आज डिक्लाइन हो गया है, ये होकर 28% हो गया है. लेकिन आज यूएस, यूके और सिंगापुर मिला के कम से कम 36% का एक रेशियो बन रहा है जो कि हाईएस्ट है. ओके, यूएस अकेला 23% का एक शेयर डायरेक्टली होल्ड करता है, क्योंकि टुडे पीपल आर डायरेक्टली मोर एंड मोर ग्रोइंग टुवर्ड्स द कंट्रीज ऑफ यूएस. क्योंकि आज हम लोग अनस्किल्ड वर्कर्स पैदा नहीं कर रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स भेज रहे हैं. So therefore, the report expects the growth in remittances to decline by about 22% in 2023, as the drop in the GDP growth in high-income countries would affect migrant workers' wage gains. So the growth in remittances is estimated to decline from 3.5% in 2022 to around 0.7% in 2023 in South Asian countries. So despite this global trend, remittances to India are expected to grow by 4% in 2023, as a large percent of Indian migrants are earning
relatively higher salaries in developed countries, and their salaries are expected to be more resilient than those of lower wage migrant countries such as the GCC countries. तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे ये डिस्कस किया गया था अबाउट रेमिटेंसेस, अबाउट विच वी आर डायरेक्टली टुडे टचिंग द रिकॉर्ड ऑफ $100 बिलियन. ओके, तो उसी के बेसिस पे ये बहुत अच्छा न्यूज़ है, बिकॉज इंडिया को डायरेक्टली make forward with a good number of remittances, and they can earn a good number of revenue out of this respective remittances. Okay, so that's all for today. We have got this 5 number of MCQs. Please do attempt and do join our Telegram as well as WhatsApp channel for further updates and some free study materials. So that's all for today. Thank you and Jai Hind.